delighted to have you here. As you all know, we are here to interact, learn, network, and listen to success stories from other professionals. We Agrawals are known for our strong work ethics, willingness to embrace business risks, and our determination to reach remarkable heights. Through these gatherings, our aim is to foster unity within our community and strive to become the #1 collective force. Isn't it? Are we going to become #1? I invite on stage the National Vice President of Akhil Bhartiya Agrawal Sammelan, Dr. Rajendraji Agrawal. And I invite on stage Mumbai President of Akhil Bhartiya Agrawal Sammelan, Mr. Shivkant Ketan ji. Our first speaker for today is Mr. Vikas Jain, the business guru. He has 38 years of management experience in various industries. He is the founder and president of India Business Group, an NGO focused on furthering Indian businesses. I call upon stage Mr. Prashant Gupta. I call upon stage Mr. Manmohan Gupta ji to introduce Mr. Vikas Jain. नमस्कार दोस्तों, मुझे आदेश हुआ विकास जी का इंट्रोडक्शन देने के लिए। सबसे पहले मैं सुमन जी को जरा थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। विकास जी का जो नाम है विकास जैन नहीं है, विकास मित्र। मैं आपको इस नाम जैन के नाम से मुझे आज पहली बार ही पता लगा। अच्छा, चलिए, सॉरी जी। आपका परिचय देने के लिए शायद मेरे पास इतने सारे शब्द भी नहीं होंगे जितना उनका लाइफ में अचीवमेंट रहा है। विकास जी को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ। उनके आईबीसी के बहुत सारी मैंने मीटिंग्स ज्वाइन करी हैं, उनकी बहुत सारे नेटवर्क अटेंड किए हैं। आप एंटरप्रेनर हैं, सीरियल एंटरप्रेनर हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि कैसे कंट्री के अंदर हम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। जो मुझे एक बायोडाटा दिया गया, मैं बायोडाटा पढ़ के तो इंट्रोडक्शन दे नहीं रहा हूँ उनका। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने एक बार एक रेडियो शुरू किया। उस रेडियो में वो एंटरप्रेनर्स को बुला रहे थे और बड़े जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको बुला के वो रेडियो के माध्यम से लोगों तक उनकी बात पहुंचा रहे थे। शायद बिजनेस की बात कर रहे थे, मन की बात नहीं, बिजनेस की बात कर रहे थे। विकास जी एक कंट्री है माली, उसके काउंसलर भी हैं और हमारे शायद अग्रवाल समाज से जुड़े हुए भी हैं, क्योंकि एक बार मैं राजेंद्र अग्रवाल जी की एनिवर्सरी पे आया था तो विकास जी भी वहाँ पे उस दिन मौजूद थे। तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद आप हमारे अग्रवाल समाज से भी जुड़े हुए हैं और समाज को प्रेरणा भी देते रहेंगे। आपका बेटा एक गेमिंग कंपनी चलाता है, नजारा टेक्नोलॉजीज़ के नाम से। उसने हिंदुस्तान में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे, हिंदी में बोलूँ तो झंडे गाड़े हैं गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर। आप उस दैट इज़ ए लिस्टेड कंपनी, उस कंपनी के विकास जी जो है चेयरमैन हैं और जीवन में बहुत सारी ऊंचाई नीचाई सब उन्होंने हम सब लोगों की देखी है और शायद वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आज आपके सामने शेयर करेंगे। तो आप सब लोग बहुत धैर्य से और ध्यान से सुनिए और क्या चीज़ आप जीवन में उतार सकते हैं अपने, वो ज़रूर यहाँ से कुछ उनसे लेके जाइएगा। धन्यवाद। मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ स्टेज पे। Please welcome Vikas ji with a big round of applause.
And before he starts, I would request Rajendra ji and Shivkan ji to honor him with a small memento. कुछ एक्सपेक्टेशंस मेरे ख्याल से ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, उतना एक्सपेक्ट नहीं करना मेरे से, but I'm going to talk about few things. If I talk about all my failures, then you will not like it and go away. So when they say that I'm a successful man, I have gone bankrupt twice in my life. So I was saying that everything is not as rosy as it sounds when people speak. So the expectations built up are always too high, and one has to bring it down, water it down so that one can talk properly. First thing I want to say that I have gone bankrupt twice. So don't really expect a very big man talking to you. I am talking from my failures rather than my success. The success is there always. So just to give a brief background, because most people have not been circulated my biodata. So I am the chairman and managing director of Nazara Technologies, a company I listed 2 years back and it's doing fairly well. Also the founder and president of IBG, India Business Group. It's a chamber of commerce, 11 years old, with about 5,000 members. We have monthly meetings and anybody and everybody is welcome to attend. Consul General of 4 years back, I was appointed the Consul General of Republic of Mali in Africa. It's a very poor country and my effort has been to bring industry there. In between because I'm a textile background man, I had persuaded my friends to set up industry, textile mills in Mali. Till in between COVID आ गया, तो वो सब पीछे हट गए. And I only advised them, don't go. But now I am again restarting that activity, that request, that please come there. The Prime Minister there has told me to write whatever policy I want from the government to set up industry. I have been a TEDx speaker, right? So I think probably everybody knows what is a TEDx speaker. I've been a TEDx speaker, but that's also 3 years back. Most people don't know that I am an author. And I have published 7 books. I bought a few here just now and gave it to Agrawal ji. Only 7 books I got. So, but at a request, I'll send the book to anybody. I'm not reaching the back. So I was just mentioning that I have done 7 books. I'll just read out very quickly the names of the books. There is a UCEO series, of which there are 4 books. And then there is one series of my posts on Facebook. I post every day something new on Facebook. It all gathered and it was gathering dust. So somebody told me, why don't you do a book on it? So 3 books came out of that. 3 200-page books came out of that. Posts on Facebook. It is my thought of the day or about what has happened in the whole world. So that is also available. Anytime anybody wants any of my books, you just put me a mail and it will reach you the next day. So as I said, I am the chairman managing director of Nazara Technologies. We took the opportunity almost in the middle of COVID to go and list. We were the first company to list after COVID. And it really went well. Not because of the company being great, but because there was nothing happening at that time in this era. I have a company in e-commerce also. I'm not trying to say anything, I'm just informing into e-commerce and food, which is called the Gourmet Company.
The best thing I like to talk about is being a radio jockey. So that is something that people find very interesting, very difficult to digest. So what do you talk about on radio? So I have an arrangement with All India Radio since 4 years, where every 15 days I take some top businessman and question him there on radio about how they achieved, what they achieved, and what are their future plans. Anybody here wants to be heard on radio? Please connect with me. Coming to the point that I want to talk about today is being the Honorary Consul of Republic of Mali. Now this is a very, very poor country. They have so much raw material, but so little production beyond that point of raw material. Almost everything gets exported as in the form of raw material. They have textile, they have cotton, which is the best in the world, but nothing is done after that. If they go to spinning, weaving, processing, garmenting, they could easily give employment to 1 lakh people. So that is now my aim, to get industry set up there. I am asking, because India is the land of textiles, I am asking the textile mill owners here to come with me and set up industry. I'll get them land for free, I'll get them whatever they want from the government. The government is fully willing to do whatever I say. So this is something, if anybody is hearing this, please keep in mind, talk to your textile friends. Make me talk to them, make me meet them. Make them come with me to Mali. Bamako is the capital city. It was a French territory up to a short time back. It has a huge potential for industry. It is one of the biggest suppliers of raw gold. But again, it ends there. The gold is just exported in raw form. Please join hands with me and come there and start producing gold items, jewelry. Somebody here is in jewelry, no? Are you? No. Somebody mentioned. So, oh, that's great. So come with me, come and produce jewelry at very low cost. Mali has one very distinct advantage in commerce. Countries like India, which are such old exporters, got caught into the web of quotas. Anybody here in textiles would know that we are so severely limited by quotas to export to Europe, USA, that there is hardly anything which actually goes. Mali has a free run. No country has imposed any quota. So with all this raw material, if anybody goes and sets up textiles there or any other factories, you have a quota free regime. And the government is willing to give any sorts of incentives. Small population, about 20 million. The language is French. So if you have to set up there, you got to learn the language. So basically this in a nutshell is what I wanted to say. What I want to do now is to answer questions if there are any about Mali or anything in the world. Just for information, I am a mentor. I do an official mentoring every Monday. So people take appointments with me about 2 months in advance because it's always blocked. And then they come and then they tell me their problems, their business, where they are stuck, why they are not growing. And I am generally able to show them whatever are the hitches there and how to come out of it. And I love it. Every Monday, 11 o'clock, my door is open for anybody who wants to ask anything. So you are welcome to ask anything if you wish. Otherwise, I will hand over the mic. Hello. Sir, I would like to ask one thing. What about the position of electricity and water there in Mali? It's a question which I would not like to answer. Because it's not a good question. Because without that, no industry can run. I know.
Yes. It's difficult, but the government is making effort, Okay. and the government is willing to give free uh, water and electricity to newcomers. No, but it is available there. It's available. Okay. It's there, but not so much. Everybody can't get it. So you need to have special dispensation from the government, and they will write you a letter for 3 years, Okay, sir. so that you can stand on your feet and then survive. And financial subsidy also they will give. Yes, 100%. No, free land and financial subsidy Yes, also. also financial subsidy. So there no need to take money or anything. Just go and start. Do you really want an answer to that? I think- Our textile leader, Mr. Vijendra Kagzi, he is Yeah, there. yeah, So he would be interested to run an industry there. जो कागजी साहब तो है ना प्रोसेस हाउस चलाते थे. हाँ, ये is still running. Yes. Hmm. न्यू बॉम्बे में ना. Yes. Oh, really? क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं उधर? We are Textile? exporting fabrics to whole of West Africa, like Senegal, Mali, Oh, Abidjan. very good. So Mali is a very lucrative market because earlier goods used to go indirectly via Dubai, then via Cotonou or Lomé or Senegal also re-exports. So of course now many Indian traders have gone and set up shop there, Yeah. but mainly they are doing trading there. Yes. And there is one concern is also the law and order situation. It is not as safe as Senegal or some other West countries. So there is a sector which has got this problem. Rest of the country is okay. No, otherwise, and I would say for everybody, the Africa is the future. People are saying India, China, after China, India, but after India, definitely these African nations, and even if you invest in property there, you will get 100x return minimum. That I can assure. So if you have any problem in Mali, please call me. I think I could sort it out. No, definitely I'll speak to you. But before we do business, we do some background checks. Yeah, everybody with the has to. local, in Africa, only local connections with the police and the government, only you can do business. That's So okay. thank you. And I will definitely contact you Yes. personally. Yes. Yeah, there is. It's mostly small scale. It's all, these are the raw materials. They build it on that. Yeah, hi. Good evening, sir. Good evening. This is Rotarian Sanjay Agrawal. Hmm. Your association with Mali seems to be quite exciting. The point I want to make it, and he made it more interesting with 100x returns to be guaranteed. So what else we Not by want? me, not by me. Yeah, because he's already experienced it. So. Yes. So we have heard from him. So I want to know, because we are from the technology side, other than textile, gold and all, are there opportunities for other businesses? Because technology is one sector which will also require to set up any kind of business there, any kind of unit there. So is there opportunities for the companies like technology sector for the software, hardware side? So that is a very common term when you say technology. You have to think of where you will apply the technology, and that is where we have to see whether business is there. So definitely that can be looked into, but Yeah. if there are opportunities, we will be definitely interested in that. There are opportunities, otherwise we can make it happen. Sure, thank you. Yeah. What is the route to go there? By air it is Athens and then Bamako. Okay. Yeah. सर मेरा नाम एमएल झुंझुनवाला है। आपने कहा कि मैं 2 बार बैंकरप्ट हो गया और मैं वापस बाउंस बैक किया, तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके क्या चैलेंजेस थे और कैसे आपने उनको ओवरकम किया। आपने क्या चैलेंजेस फेस किए और कैसे आपने उनको ओवरकम किया, मैं आपसे थोड़ा प्रेरणा लेना चाहता हूं। थोड़ा उस पर आप थोड़ा लाइट डालें प्लीज। The main thing is anybody who goes bankrupt gives up. Main thing वही है कि don't give up. Just be sure in yourself that you're going to come out of it. You are bound to. I did. Yes.
was all wrong decisions. So the point of time I thought that I could do nothing wrong. And I took decisions which are not right. Yes, but in my case it worked. Made me bankrupt. विकास जी, वहाँ पे उसके लिए सब अग्रवाल लोग को आपका क्या मैसेज है? हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अग्रवाल मैं भी हूँ. हाँ, तो आप और मैं नहीं है, हम हैं. हाँ मैं यही बोल रहा हूँ ना. The main thing in business में, in my opinion, whenever I speak, I always say that start and end with honesty. It will never let you down. क्योंकि इंडिया में बिजनेस करने के भी कुछ गुरु बताइए, बिजनेस गुरु हैं आप. अभी तो इंडिया में तो ग्रोथ ही ग्रोथ है. आप कुछ भी बिजनेस करो, आप ग्रो ही करोगे. As long as you keep the basic principle, zero debt is very important. Honesty is very important. Don't take debt. That is the killer for any business, any industry. क्योंकि पैसा लेना बहुत easy है. पैसा वापस करना is the difficult part. That's what kills us. अब मैंने मतलब जीरो से 10,000 करोड़ पे ले गया कंपनी को, मेरी कंपनी को, विद जीरो डेट. तो ऐसा तो नहीं है कि पैसे के बिना नहीं होता है काम. देयर आर वेज एंड मीन्स. सर, मेरा सवाल माली को लेके है. आपने कहा कि वहाँ पर सब तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं लेकिन इंडस्ट्री नहीं है. यस. तो मैं जानना चाहूँगा, ऐसा तो संभव नहीं है कि कोई भी इंडस्ट्री नहीं हो. अभी हाल फिलहाल वहाँ पर किस टाइप की इंडस्ट्री है, किस लेवल की इंडस्ट्री है, ये मैं जानना चाहूँगा, एग्रीकल्चरल को छोड़ के, क्योंकि एग्रीकल्चरल तो सब जगह होती है. तो उसके अलावा किस टाइप की इंडस्ट्री करंटली वहाँ पर है? स्मॉल स्केल है, जैसा अपना स्मॉल स्केल है इंडिया में. देयर इज नो इंडस्ट्री विच हैज एनी रीजनेबल वैल्यू. वो छोटे छोटे फैक्ट्रीज लगा लेते हैं इंडिविजुअली. बिकता है, चलता है, नहीं चलता है, बंद हो जाता है. गवर्नमेंट इज सब्सिडाइजिंग अ लॉट, तो उसके स्ट्रेंथ पे इंडस्ट्री चल जाती है. बट दैट्स इट. देयर इज नो ग्रोथ. Yes. So government gives subsidy. Yes. नहीं, वो तो इन्वेस्टर्स तो हर गवर्नमेंट बुलाता है, इंडिया भी बुलाती है. ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है. पैसा तो हर एक कंट्री में है ही. It's how you utilize it. You have to mold yourself to that country and its requirements, and then go for funding. Funding is there. Good evening, sir. Sir, you are. So my name is Manish Agrawal. I work with Z Entertainment as head of marketing. Okay. So, sir, you are such a successful person. You have created wealth and for yourself and for your investors. How do you motivate yourself? Like you write, thought of the day, what is happening around the world every day. You mentor people every Monday. How do you push yourself? How do you motivate yourself? यही है. सबसे पहले तो प्लीज स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली. आई वेक अप एट 4:30 एवरी डे, एंड दैट इज माई राइटिंग टाइम. दैट इज वेयर माई बुक्स कम आउट ऑफ. 4:30 to 6, and then the regular day starts. So it's no magic. Everybody can do it. Yeah, Abhishek Agrawal. I'm a chartered accountant by profession. So, sir, one thing we want to know from you, one thing we should do in our career or the profession which can differentiate, from the others, which just like you did in your career. So, what one thing which we can try to do in our life so that it will differentiate from the competitor or in life as well? So more than telling you what you should do, let me tell you what you shouldn't do. Don't overreach ever. Don't be dishonest. Don't tell somebody that invest so much in me, this is the return you will get. Never promise that. Let people invest in you based on what they think you are.
Don't promise. Good evening, sir. This is Akash. And I had a question about, so you mentioned that you have written 7 books, you write a lot of posts every day. So, what I want to know is where do you get your creativity from to be such a prolific writer? Like, people find it difficult, like, even when I try to write. So, I have to sit down and sometimes for days I cannot write. So, what is it that you do that you can write every day? Where do you get the creativity from? How do the words flow? So I'll tell you, I cheat. I see the news of the world every day. Everybody sees. But out of that, I pick up one thing on which I want to comment. And that's what I post on Facebook. So it's nothing original as such. I have to do it yet. Can't remember. So I've got a few books here of my posts, and anybody wants can take. I only got 2 books, 2 sets. Sir, last question. Yes. In Uganda, they have offered Agrawal Sammelan 100 tickets for going for sales promotion. Okay. For Mali, how many tickets for Agrawal have you offered? I'll answer that shortly. Yes, sir. The Mali ambassador was with me today. Oh, wonderful. And I told him that I'm going out there and I'm talking on Mali only. But he had already booked his ticket. And he would have stayed back. Yes, sir. But his wife and son had also come. Yes, sir. So I couldn't stop them. So he would be the person to answer, not me. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir, for talking about Africa. The next speaker which we will get next time is going to be C.A. Sudha Bhushan, who has written a book on investment in Africa. So I think this would be related. Our next speaker for today is Mr. Wu Metzeler, the Managing Director of Presto India. Presto India is a part of Presto Enterprises, Spain, and now operates 40 stores in India. You will be surprised to know that this company is the leader in dry cleaning, laundry and cobbler services. I would like to call upon Mr. Suraj Saraugi on stage to introduce him. Suraj has been our mentor for this business meet along with Sumanji. So thank you very much. Thank you very much. Thank you for your kind words. Yuvo has been a very, very dear friend. And after 6th business meet, I thought it is nice to have a perspective of an international person who's decided to settle in India and create one of a very successful businesses out of a business which we all never really thought very big about. You know, dry cleaning services and all that, dhobi, whatever you call it, but we never really paid attention. And I know him very well, how successful his company is and the kind of cash flows they generate and the kind of cash profits that they make. A foreigner coming to this country, giving up his most cushy jobs. He was the managing director of ING Insurance. Prior to that, he's traveled all over the world, being at the highest level of management in banks, and then starting his own entrepreneur venture and making it so successful.
So I think we need to listen to him now and understand he's a Dutch national and a dear friend. You, I'll invite you on stage and please guide us what brought you to India, what makes you come from one of the good nations to India and make some money over here for yourself and your family. We are felicitating you first from our Akhil Bhartiya. So here's the mic for you. I'll take it. Suraj, thank you very much for your kind words and thank you very much for the invitation. Are you taking my glasses? No, never mind. Never mind. Okay, good. So I have kind of maybe some surprising news today, because we are right in front of the high season, and that is our big season actually, because if people party, meet each other, go have meetings, then they need to be very well dressed. So then they very often come to Presto. It's also incredibly nice to meet you all, and also in similar gatherings, because many of you already know Presto. So I feel quickly at home, and we can make jokes, and sometimes we make mistakes, of course. And I'm always reachable. I'll pick up the phone if you have any complaint, and we act quickly. But we are not in the business of dry cleaning and cover anymore. We are, from today onwards, more or less, in the business of look good, feel better. Because that is what it's all about. And I had prepared some extensive presentation, and then I realized that we would not have a screen, which makes it easy for me to talk from slides, but doesn't matter, I will manage. And luckily we have a nice book for you, which is called Look Good, Feel Better. This goes out in the market with L magazine, in about 1 lakh of magazines, and then their readership is 3 lakhs, and you know all these words. So you will be flooded. And we have a few books for you here if you are interested. So Esther and I, Esther is my wife, we came to India in '97 into Delhi to set up ING. And we came from a country called Aruba, which is a very small country in the Caribbean. And there ING had an integrated business of insurance. I'm an insurance man. So that was life insurance, non-life insurance, pensions, health insurance. And we had a market share of like 30–40%. So we were by far the largest there. And before that I was in the Netherlands, where we also had a large 30–40% market share across insurance markets. So then people who were managing the Asian region, who sit in Hong Kong, asked me to consider to come to India, where you could not even do any insurance business as a private enterprise. And it was not the smallest country in the world, but the biggest. So that kind of intrigued, and it was kind of interesting. And we were very well taken care of in Delhi. And I played golf, so we were staying in the Oberoi in Delhi, and right next door there was a tournament. So it was a very nice, pleasant environment. So after some up and downs, we moved to India, and I met Esther in, say, '95, and we went to India in '97. So it was kind of also little uncertain if she would actually join, which she luckily did. And there's one other interesting story, is that when we applied for a stay visa, you need to go to the FRRO and go through all those motions. And we were at that time not married, we had a living together contract. So many people around us said, oh, that's very difficult, and you have to have a lawyer, and you have to have this and that, and it will cost you money. And this FRRO office in Delhi is right behind Khan Market. So we said no bullshit, and on whatever Friday morning, we
we went there together, and within 15 minutes, our application was approved. So this was a fantastic experience. We also had other experience, of course, but that I'll never forget that kind of 15-minute. So there are many stories like this. Let me go a little bit more to the point. So in 1997 we came. Then we lived in India until 2004. We moved from Delhi to Bangalore, where we started the life insurance company. Then I went for ING to Mexico. And then I ended up not in the fight, but we didn't like each other anymore. So just before the big financial crisis, I left ING and moved to Singapore. And in the meantime, Esther had kind of explored some other businesses. What would we go and do after me leaving Mexico? And we said, look, we have to go back to India, because what is happening in India from a distance in Mexico in 2004, 2005 was like exciting. And we have always, or I've always said, like we are one European and one Indian together. No? Esther is like 2/3 Indian and I'm 1/3. And I'm 2/3 European and she's still 1/3. So it's 1 plus 1, no? It's 3 actually. And by now we have decided to stay here forever. This will be our home, and we may travel a little bit more, this or that, but we will stay here. So, and that's actually very comforting. And your perspective also on India changes. Because then you get much more involved and concerned about the country than if you say, look, I'm going in 5 years or 7 years or whatever. No? Because that is not the case. And I made that change about 12, 18 months ago. So we now say, if people say, where are you from? We say, I'm from Colaba, Mumbai, Amsterdam. Because Amsterdam is better known than Netherlands. So, anyhow. So Esther came with the idea to start Presto in India. And I was still meddling in financial services, trying to set up brokerage for life insurance, which didn't happen because of that crisis. So that was from scratch. And it was kind of crazy. Some Dutch people, they acquired a franchise from Spain. The idea originated in Mexico and they were going to do it in India. So, how can you think of it? We got a good partner at that time, at least, in India as well. So they helped us a lot in the startup. But basically, Esther was running the show. And she did everything from detailed technical know-how about how machines work to how solvents impact different types of textile, to marketing concepts, and above all, how she dealt with people. That was so genuine, and for her everybody is the same. If you're high, low, rich, poor, boy, girl, whatever, everybody is treated the same. And there are better words to explain how that really works, but that is the biggest success of our company, is how we look after our people. And that comes with high standards, in a way, Also because where we are coming from. And we are very proud that we lift people up because they come from far and far away. They come to Mumbai, which is not easy. They need to support their family in the village. They still live, in where in Mumbai. They work hard. They are totally dedicated if you take care of them. So it's always a two-way street also. So that is our biggest power. Everybody can buy machines, everybody can rent a location, everybody can, but the people who operate your business are the most important. It's 80%. The rest is all simple. So that's that's the most important thing. And I had an interview in I think it was Mumbai Mirror some time ago, and there were some stories about what kind of things we did. The last question was, so what is your mantra for the future? The question alone. And I put in capitals, people, 5, 6 letter word. And then they insisted on, you need to say much more, you need to say how you do it, and this, and I say nonsense, it is people, nothing else. And I learned that from Esther, because Esther is the leader in this business.
I'm just a manager, in a way. So I luckily made some prints of my slides so I can remember what I want to say. So it was Netherlands, Caribbean, then Mexico, Singapore, and back in India, what I call Forever India, like Forever Presto. So we have 40 stores in three regions, Bangalore, Mumbai and NCR. Mumbai is by far the biggest, that's also where we started. Then we moved to NCR, and since 5-6 years we are also in Bangalore. Bangalore is incredibly successful. Also people from Chennai, Mysore, Mangalore, and we have almost a regional function, especially in the cobbler business, which is quite unique. What we do, nobody else does in the world, combining dry cleaning and cobbler at the level we are doing it. So of course these markets are different, not all micro markets in a way, with different cultures, different lifestyles, different attitudes. But it is also very much the same. If you look at our business dynamics, they are actually quite similar across the regions. And what we sometimes say, because we service not a higher end, is that also cities in the world are more similar than countries in the world. Also, it's better to operate in Mumbai, Singapore, Kuala Lumpur, Dubai, London, and New York, Paris, whatever, than to think in countries. Because customers in these territories, at least at the higher end, have very similar behavior. And of course, this one is maybe more competitive or more price sensitive, or but there's nothing new under the sun. No? So we don't get daunted, and we are totally clear on what we can and cannot do. We try to be as transparent as possible. Okay, so our business is actually still small. It's a 50 to 100 crore kind of bracket, and we have the ambition to triple the size. So what do? Do you go into a different segment? Or do you go to the mid-market, so to say? Or do you try to get more services across to your existing customers? So the first thing is what we actually want to do, because to go to a mid-market is also a very different way of doing the business. It can always be done, but then you may buy a chain like that and run it under a separate brand. Because if you want to reach, let's say, the 300 crore revenue level, which is interesting also if you want to go for a, say, mini IPO, but then you need to accumulate some, also partly half will be growth, additional services, more stores, more cities. But to remain profitable at the level you are, you need to be very disciplined as well. No? We are not a scale game, we are a profit game in the end. And of course, if we add new services, we can digest startups and mistakes and stuff like that. So, well, one of our, I think, unique things is how we position ourselves. And sometimes you think, is it maybe a little bit too much over the top? But luckily Deepika is also here and wanted to join me. Is the way we position ourselves and the way we market ourselves. We won kind of a ridiculous amount of awards last year, some 4 or 5. Because if you are on the list of the kind of publishing houses, you get calls all the time. And by now we know what to select and what not. No? But it's kind of good for people internally that they also see that public is recognizing you, and it's also good for the business. So one of the highlights, or the highlight last year, and that's actually also where it all started, is that we sponsored the L Beauty Awards. So I had the pleasure to give Deepika Padukone some recognition, some prize on the most beautiful girl or whatever it was. No? So, and I am already a fan of Deepika Padukone for the last 15 years. So it's not a fly by night. So
we are trying to do some exercises, or I'm trying to do some exercises on what is the actual market size of dry cleaning and laundry in India. And there are so many different segments, it's difficult to say, because we think that our segment is about 2,000 crores. If you do the mathematics, you say, okay, there are so many households, we know how often they come each month or each year, we know what they spend on average. So then if you multiply that, you come to some 2,000 crores. It doesn't mean that you can reach that number of households, which we think is about 1 million in the whole of India, urban India. That's 1% of all the households. You can't reach those profitably, because you also need density and lifestyle. And if you then go down to 3 cities, compared to whatever number of 1 million, which is 1% of total households, which is not unreasonable, that's like also a little bit of a global percentage of high end. So then you come down to that we can grow probably to 80 to 100 stores in 5 years' time. We will not do it immediately. Let's put in 50 this year or something. It doesn't work, very difficult to find the right locations. And we did that at some point, and we made a big mistake, and then we came back again, and then the pandemic came. So we had like a couple of waves in our business as well. We were very lucky before the pandemic, because we had good cash in the bank, and we survived 90, 60, 150 days. We lost 150 business days on say 700 business days. And we never missed a salary payment, always on the 3rd of the month. But people made some concessions, we reduced it a little bit and then came back again. And we also closed 10 stores, and that made us very profitable after the pandemic. Now, so then what I call, so we are the precious market, the precious garments type of thing. Then there's the formal garments. So that market is probably like 8,000 crores with some other, same kind of, at least we have the template to now understand the market size better. And then there is the Adobe replacement market, which is like big basket formulas, which you go so deep that you don't know whenever you get back up again. We don't like that also as a principle. But there are some operators there who also have that background. So we'll see how that happens. And the pickup and delivery we also do in our own way. And it has interesting, little bit more favorable business dynamics. And we have ways to manage the cost of it, because in the shop you get so-called loyalty card that is effectively 5, 6, 7% discount, and that you don't get if you do pickup and delivery. So then that breaks even. So maybe what we are also quite proud of is the way we assess potential of markets. We now have a very defined kind of model to do that across 4 vectors, and we can visualize it. So for further expansion, we are very confident that we can be sharpshooters instead of guessers and gut feel. It doesn't find gut feel, but you have to have the data and the method to assess. So then, if I end with saying that kind of my inspiration, in a way, is a couple of things. And they are on a big slide I wanted to show you, but I will now read it to you. And the first one is actually the principle of that nothing is impossible. And nothing is impossible comes from Pegasus. And Pegasus is a flying pig. And this was the emblem one John Steinbeck used, who is a writer who won the Nobel Prize, selling 50 million copies of The Grapes of Wrath, which is a terrible, sad story. And why is nothing is impossible is that 30 years before he wrote that book, his university professor said to him,
you better go and do something else because you will never be a successful writer. No, but so that's a little bit also in some letters we are currently involved is what I keep remembering me, nothing is impossible. Like Deepika Padukone, giving her a prize, no? That's kind of unimaginable. And the way Deepika organized that, no? Fantastic. So then another one is, well, simple is the most difficult actually. And there's a Dutch soccer player by the name of Johan Cruijff, who is like Pele level and Messi level and all that, and he became a trainer. And he was famous for his ununderstandable expressions, no short phrases. And one was that no, simple is the most difficult. No? Every upside has a downside, no? Where everybody could understand immediately what he meant. So that is also, if I try to make all these Excel overviews and just, what am I actually doing? And then kind of also to overcome, I for some time have used every WhatsApp I send, I ended with JO, no? I will overcome. So these things have give me inspiration and also strength and perseverance to continue. And so now we look good and feel better. And later on we will look good and feel fantastic or great. So in this book is only the first part of a whole series of books. So I'm becoming a writer. So thank you very much. That's it. Any questions? Hello, yeah. So we would never believe that a dry cleaning business can be seasonal business. We think भाई सब कपड़े पहनते हैं पूरे साल पहन रहे हैं. Their turnover from October to March is twice what they do in the first 6 months. So that's again we Indians, winter season, marriage seasons, parties, celebrations. That is all concentrated. Diwali festival. It's all concentrated in the last 6 months. So this was a very good learning for me when I was doing some work for them. Hi, good evening, sir. It's fantastic to know about the kind of experience you have. Like you've been to so many countries, so many cities, you work with so many people. And like you rightly said that it's easier to do business, like cities are similar, more similar than countries. So what I'd like to know from you is, because you have this orientation towards people, like you said, like they are your most important asset. So what is the common binding thread that you found in all the different cities, all the different countries you worked? What is it that motivates people across countries, cities, across like all levels? Well, let me answer it a little differently, if you don't Sure. mind. So it is kind of, for me at least, relevant to compare India and Mexico. And in terms of people, that the eagerness to learn, the curiosity to ask in India is fantastic compared to Mexico, where people are afraid and lazy because the US have given them a backyard where they can just play and do nothing, actually. So that's how and that difference is stark. Don't tell it to the Mexicans that I said this, and they like beer also. Good. They are also, their habits are like, crazy. My question was more towards what you feel motivates people, like when you manage people, like you manage a team. So in some, like some managers, they might have this orientation that let's give people more money, that will motivate them. Some might have the orientation, like you said, that treat everyone equally, that will motivate them.
So in your experience, what have you found? That is it money that motivates people? Is it behavior? Is it culture? Well, I haven't really thought about it, but in a way maybe I have. But look, money is hygiene, no? It remains very important, and you should reward people who perform well, and you should have a very fair system. And look, the most rewarding thing is if you can develop people through their career, no, in a way. No? They join you when in their, say, 20s, and in their 40s they kind of may become your successor, no? Which actually happened in ING, and that person is still a very good friend. So to see people pick up opportunities and develop and grow, no? And live better lives and contribute significantly, that is the most beautiful thing to see, actually. And we also have people who we picked up as drivers, who are now regional managers in the business. And they are also grateful. Education, or whatever, in our business, when we hire people, is not the criteria. Only character counts. And religion also, we have all religions. And they all work together. It's also very practical because you can be open every day of the year because of that. No problem. Thank you so much. Any more questions, anyone? So, no more questions. Thank you very much. Thank you, Mr. Yu, for once again reminding everyone the motto, nothing is impossible. Last but not the least, our next speaker for today is Mr. Akhil Bhatt. This is a very inspiring story of a self-made businessman. He started as an insurance agent and now he owns a juice and restaurant chain. Let us hear more about him from his own mentor, Mr. Suraj Saraogi. Thank you, everybody. I must tell you, 20 years back when I met Hemang, he was an insurance agent with a single man with a briefcase. He used to market his insurance policies to everybody. From there and now 20 years hence, runs multiple businesses, a complete entrepreneur, seen lots of ups and downs in life, runs very successfully a brand called Bhagat Tarachand. He runs a brand called Has Juices and More. He runs a brand called South Bombay. So I can go with the list and every day he will come with a new idea. So that's what Hemang is. He's seen, so in the food business, the worst times were the COVID times, wherein your overheads are on, you have to pay your salaries, you're always scared that your team will go away, and to manage the cash flows at that point of time was really, really unbelievable. This is the man who really picked up his own car and became a delivery boy, going to each and every person's house and used to deliver himself in that COVID period of time. Even in that COVID period, he had achieved fairly good amount of success in business, but his humbleness came back. He again started off by being a driver of his own food delivery business. So that's what Hemang is for you. I invite him. Before that, just 2-3 minutes about this business meet. Rajendra ji introduced me to this kind of business meet. I am also an Agrawal. I really take pride in being part of this business meet. This is for sure, there is some kind of bonding, there is some kind of family group that we are. Like normally भी होगा कि आप अपने कोई जान पहचान वाले होंगे तो उनके साथ में बिजनेस करना, बिजनेस देना प्रेफर करोगे. एक जो बैरियर होता है वो बैरियर इमीडिएटली ब्रेक हो जाता है. तो सिंसियर रिक्वेस्ट दैट लेट्स प्रमोट business development in the community, give each other a fair chance, meet more people, have these kind of interactions, and also bring the next generation to this platform. That's again very important. So this is my small request, and thank you very much Rajendra ji for giving me this platform. I'll here
call on Hemang to share his journey with us quickly. I want to say one thing. If anyone who's been coming to this business meet and has benefited and accomplished something different in your business, please come and share. At the end of the meeting, after the 3 speakers, session is open to everybody. Please share so that others are motivated. We will just appreciate Hemang being here with a token of appreciation. Thank you so much, Suraj, for this opportunity. I genuinely feel humble and honored when he messaged me that you would like to be a motivational speaker or some speaker, and it is the first time that he messaged something like this. So I feel something really great about it. So when I was 18, let me start quickly. When I was 18, I was before 18, अच्छा, सो 18 साल का मैं जब था, उसके पहले मेरी लाइफ बहुत ही स्मूथ थी. I was coming from a very happy family. My grandfather was a very well named in Mumbai. He was वो चार्टर्ड अकाउंट काउंसिल के चेयरमैन थे. उस समय पे 1947 में उन्होंने चार्टर्ड अकाउंट काउंसिल चर्चगेट में उन्होंने बनाया था. तो फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था. मैं जब 18 का हुआ, उस समय पे कुछ ऐसा हुआ कि कुछ भी नहीं था हमारे पास, और काइंड ऑफ आई वॉज आउट ऑफ द हाउस. और 18 साल की उम्र में मैं खुद वन ऑफ माई फ्रेंड मेरे फ्रेंड के घर पे रहने को घर जाना पड़ा. कुछ समय निकला, एंड वही समय पे मेरी मम्मी इंश्योरेंस कंपनी में थी. सो मैंने उनके साथ में वो इंश्योरेंस, शी वॉज ऑफिसर एंड उन्होंने भी VRS लिया. दे वेंट टू गुजरात, और मैंने वो इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचना चालू किया. मैं साथ में पढ़ाई भी करता था. और जब मैं 18 साल से जब शुरुआत किया, तो मैंने देखा ये तो 1-2 पॉलिसी बेच रहे हैं. तो उस समय पे 500-700 रुपया मिल रहा था. तो बाय द एज ऑफ 21-22 साल में मैंने इतना मेहनत किया उस पर कि मैं आराम से अपना खुद का आई वॉज एबल टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ बाई ऑल मीन्स, एंड डूइंग क्वाइट अ वेल. माने उस समय पे शायद मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, मेरे रिटर्न फाइल्स भी हैं कि मेरे चाचा ने मेरा फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल किया व्हेन आई वाज 21 वाज ऑन मोर देन 1 लाख रुपीस अ मंथ. सो इतनी मेहनत करता था कि मैं अगर एक पॉलिसी ना बेचूं तो मैं उस दिन का मेरा प्लेस था, मैं खाना नहीं खाऊंगा. एंड स्लोली ग्रेजुअली थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग. आई एम 42, मैं 42 ईयर्स का हूँ, और आई एम अ रोटेरियन फॉर लास्ट 18 ईयर्स. सो मैं जब 24 साल का था तो मैं रोटरी में ज्वाइन हुआ. और उस समय पे मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं रोटरी ज्वाइन कर रहा हूँ कि कोई इंश्योरेंस मार्केटिंग करूँ. मुझे कुछ सीखना था. आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल गो अहेड इन द लाइफ. एंड मुझे इतना समझ में आ रहा था कि मैंने उस दरमियान में काफ़ी सारे कोर्सेज किए हैं, जो 18 से लेके 23-24 तक में ऐसा शायद ही कोई सैटरडे संडे था जो मैंने कोई कोर्स नहीं किया हो. मैंने भगवद गीता का कोर्स किया, मैंने एक्टिंग का कोर्स किया, मैंने ग्राफोलॉजी का कोर्स किया, मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन का कोर्स किया, मैंने सालसा का कोर्स किया. जो भी कोई कोर्स मेरे को अगर मुंबई मिरर में दिखता था, उस समय पे आते थे सारे, तो जो भी कोई कोर्स आता था मैं वो सारे कोर्सेस अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करता था. एंड दैट हैज़ रियलाइज्ड मी इन लॉट ऑफ मोटिवेशनल कोर्सेज. उस समय पे एक जितेंद्र अढ़िया करके भी थे, उनके भी काफ़ी सारे कोर्सेज किए. तो उससे ये पता चल रहा था कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप आपका जो विजन है वो थोड़ा बड़ा रखो और अच्छे लोगों से मिलो. तो मेरे ग्रैंडफादर थे, वो फ्री मेसॉन में थे. आई डोंट नो वेदर हाउ मेनी नो फ्री मेसॉन्स. सो वो एक कल्चर था एज अ सोशल. तो मैंने बचपन में मेरे ग्रैंडफादर के बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स और स्टोरीज सुनी थी. तो कोई परिचित में आ गया और उन्हें बोला रोटरी है, तो मैंने रोटरी ज्वाइन किया. वहीं से
एक टाइम था जब मैं और सूरज हम लोग मिले और एक रात को पार्टी कर रहे थे। रात को हम लोग की रोटरी की पार्टी होने के बाद में वी बोथ वर इन आवर पार्टी मूड, और नेक्स्ट डे बात हुआ कि मिलते हैं हम लोग। और मिलते ही फिर रात नेक्स्ट डे मुझे पता नहीं था कि वेदर वो डेडिकेटली फ़ोन करेगा, एंड ही कॉल्ड एंड सेड वांट मीट। तो हम लोग मिले उनके ऑफिस में एंड वी डिस्कस कि क्या ही इज़ अ वंडरफुल आइडिया मैन। आई मीन जो सूरज को जानता है वो सब बोल सकते हैं कि अगर किसी को कुछ आइडिया चाहिए लाइफ में तो आई हैव अ वन पर्सन इज़ अ सूरज। तो मैं सूरज से बात की, मैंने सूरज ने बताया कि ऐसा ही उसका आइडिया है कि कुछ ऐसा कर सकते हैं। अभी के काफ़ी सारी रिटेल ब्रांड्स हैं और वो रिटेल ब्रांड्स को के सामने काफ़ी सारे अपने इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप्स भी बहुत उभर के आ रही है। तो क्यों नहीं हम लोग ऐसी कोई कंपनी चालू करें कि जहाँ पे हम लोग एक तरफ एंटरप्रेन्योर्स हो और एक तरफ ब्रांड्स हो, इन दोनों को हम लोग मिलाएं और एक मैनेजमेंट कंपनी खोलें। तो उन्होंने मेरे को एक लेसन पे लगा दिया, एक मैकेंजी की रिपोर्ट पे। तो 7-8-10 दिन हमने वो मैकेंजी का रिपोर्ट पढ़े और देखा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ अभी इंडिया में है, और वहाँ से हम लोग ने शॉर्ट लिस्टिंग किया काफ़ी सारे ब्रांड्स को कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो शुरुआत में जितनी भी ब्रांड्स हम लोग ने अटेम्प्ट की, वो सारी ब्रांड्स में हमने शुरुआत की, सीखा, और दैट वो समय पे इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ऑफ कोर्स इनिशियल लर्निंग्स यू हैव टू बी आपको वो सब पे करना पड़ता है। इट वाज एफर्ट्स एंड मनी, एवरीथिंग वी वर स्टेक पे थे। सो वहाँ से हम लोग ने एक ब्रांड हैश करके इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। एक जेट किंग के ओनर हैं, उनके बेटे ने यूएस में जाके एक ब्रांड देखा था, जाम्बा जूस यूएस में, which is having more than 900 plus outlets in USA. So उन्होंने देखा कि there is a good opportunity, वहाँ पे काफ़ी बड़ा opportunity है, तो क्यों नहीं एक जूस खोला जाए। सूरज ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी किया, और being a part of the company, I been projected कि मेरे को ये इसके रोज के रोज देखना है। So मैं जो देख रहा था, because the kind of company was डे टू डे ऑपरेशंस चल रहे थे, तो एक चीज़ था कि हम लोग ने प्रिंसिपली रखा था हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, जो कर रहे हैं उनको एक्सपेरिमेंट करें, और हम लोग भी क्वाइट नए थे। तो उस दरमियान में उन्होंने अराउंड 2-3 साल कंपनी चलाई एंड थिंग्स हैव नॉट वर्कड फेयरली। और एक बार ऐसा आया कि कंपनी ने हम लोग ने डिसाइड किया कि इसको बंद किया जाए। सो मैं, सूरज और अविनाश बारवानी वो एक रूम में बैठे थे, तो वी सेड कि लेट मी हैव अ लास्ट ट्राई। मैं 2-3 साल से उसको देख रहा था, तो हमने एक आउटलेट खोला, वो एकदम फ्रेश आउटलेट खोला, और वो फेयरली ओके हुआ। जूस एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो हम लोग आज मॉर्निंग में सोचते नहीं कि आज मैं जूस पीऊँगा। जैसे आज बाकी काफ़ी सारे क्यूजीन्स होते हैं जिसमें हम लोग सोचते हैं कि हम लोग आज इटालियन खाना है, आज या तो कॉफ़ी पे मिल रहा है, वी नेवर से कि हम लोग जूस पे मिल रहे हैं। तो जूस हमारे लिए कोई बहुत प्राइड या प्रायोरिटी प्रोडक्ट नहीं है। तो धीरे धीरे वो भी 2007-8 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो उस समय पे हमने शुरुआत की, हमने देखा कि कैसे क्या क्या कस्टमर्स बिहेवियर्स हो रहे हैं, एंड वी देन जो उनके जितने भी आउटलेट्स थे उसके ऊपर हमने काफ़ी सारे जो भी आउटलेट थे वहाँ पे हमने ध्यान देना चालू किया। ऑपरेशनली हम लोग ही इन्वॉल्व थे। सो उनके जितने भी लॉस मेकिंग आउटलेट थे वो सारे बंद किए, जितने चालू ठीक ठाक चल रहे थे उसको हमने सही किया। और आइडियली हम लोग ने जितना, एक ही चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आई हैव ओबरॉय का जो मॉल हम लोग ने एक आउटलेट खोला था, जहाँ पे उस समय पे 2 लाख से 2.5 लाख का सेल हुआ करता था 3 साल में। फ्रॉम 2007 वी ओपन, 2010 द सेल हैज नेवर गॉन अप टू 3 लाख रुपीज़। मैं 7.5-8 महीना वो आउटलेट पे बैठा ही रहा था। एवरी डे मॉर्निंग में 10 बजे जाने का, 6-6:30 बजे निकलने का वहाँ से, और कभी समझो 3 बजे गया तो
रात को 9 या 10 बजे तक। 7-8 महीने बाद हमने कॉल लिया कि इसको रिनोवेशंस करते हैं, और रिनोवेशन करके हमने रात को 1 बजे में वापस एक साइट पे गया, क्योंकि मुझे एक अचानक से क्योंकि आप रोज कोई काम करते हो तो एक अचानक से कोई दिमाग में आता है, काम चालू था, कुछ चेंजेस कराए। नेक्स्ट डे मैंने मेरी टीम को बुलाया, हम लोग नीचे कैफे कॉफी डे में बोले कि हम लोग ये आउटलेट को 8.5 से 9 लाख रुपया 1 साल में करेंगे। तो उनको भी लगा ये रोज आ रहा है जा रहा है, ऐसा तो कुछ खास अभी तक कुछ किया नहीं है। एंड वी मेड इन दैट 1 ईयर वी क्रॉस 9 लाख रुपीज। सो समथिंग हैज बीन अंडरस्टूड कि क्यों कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं चलता है, तो आई फाउंड माई सेल्फ कि मैं ये प्रोडक्ट क्यों लूँ, वाई शुड आई बाई दिस प्रोडक्ट। तो वो जो सवाल था वो मैं 6 से 7 महीने कंटिन्यूस मेरे वहाँ पे रोज लेके जा रहा था, एंड दैट इज अ रिजल्ट विच आई फाउंड कि कुछ राइट थिंग्स ऐसी करनी चाहिए थी। जो आंसर्स थे वो काफ़ी बड़ा लंबा विषय हो जाएगा फिर, तो वो हमने चेंज किया, 8.5-9 लाख रुपए का स्टोर बनाया। और जिस टाइम हमने 9 लाख का स्टोर बनाया हमको लगा अभी सब कुछ सही चलेगा, और वही साल में ओबरॉय ने हमको फ़ोन करके बोला कि आपको ये आउटलेट छोड़ने का है, यहाँ पे एक नया ऑस्ट्रेलियन ब्रांड आ रहा है, आई फॉरगॉट द नेम, बूस्टर। सो बूस्टर करके कोई ब्रांड है, उन्होंने 40-50 स्टोर एक सिर्फ 3-4 महीने में खोल दिए थे। उन्होंने ओबरॉय में भी स्टोर लिया था, एंड आई टोल्ड माई टीम दैट डेफिनेटली वी विल गेट अ चांस बैक। उनका जैसे हमने देखा कि उनका ऑपरेशंस कैसा है, कैसा हो रहा है, तो वी अंडरस्टूड कि ये हम लोग 1 साल में वापस बुला सकते हैं हमको। फॉर्चुनेटली हमको बुलाया, एंड वी अगेन went there. On a 100 square feet outlet, we marked 19 lakh rupees of sales. So something in terms of जो जूस में माने शायद ये रेस्टोरेंट का आधा सेल होता है। उसके साथ में हमारा तो वैसे ही आज की तारीख में हमारे जितने भी आउटलेट्स हैं, हम लोग अभी साल में 1 आउटलेट खोलने का सोचते रहे। वी प्रीफर नॉट टू गिव फ्रेंचाइजी, वी लर्न कि अपना इन्वेस्टमेंट करो, अपना पैसा लगाओ और अपने से ही प्रॉफिट निकालो। दैट इज़ द राइट वे एट दिस मोमेंट। फिर एक ब्रांड था साउथ डोसा प्लाजा करके, सो वो भी कुछ ऐसा ही था। वो इन ऑर्बिट मॉल में हमने डोसा प्लाजा में पहले शुरुआत के कोर्स में इन्वेस्टमेंट किया था, बट वो कुछ मॉल के कारण चल नहीं पाया। फिर हमारे को वापस इन ऑर्बिट मॉल ने फ़ोन किया कि एक डोसा प्लाजा का आउटलेट है, आप लोग अगर लेना चाहे तो। वो भी लॉस मेकिंग था। सो हैज़ के बाद में दूसरा एक डोसा प्लाजा ब्रांड, वो लॉस मेकिंग है। हमने वहाँ पे शुरुआत की, टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ मॉल के साथ में रखी हुए, ब्रांड के साथ में रखी हुए, और उसको हमने रीशफल किया आउटलेट को। वो जो 8-8.5 लाख रुपया करता था, हमने वापस उसमें पूरा मेहनत करके हमने उस समय पे 12-13 लाख पे उसको लेके आए, एंड देन ग्रेजुअली वी वर इंक्रीजिंग अवर सेल्स ऑन दैट पर्टिकुलर आउटलेट। नाउ वी डू 27-28 lakh rupees with only 10 people, with only 400 square feet, and we again open our own stores. तो वैसे हमारे 6 स्टोर्स हैं। भगत ताराचंद इज समथिंग अ स्टोरी विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं बचपन में हम लोग साउथ मुंबई में कुछ ब्रांड्स थे, जैसे अगर आपको कोई अच्छी फेस्टिवल ट्रीट है तो खैबर, गैलोड, इंडियन समर, या 3-4 ऐसी रेस्टोरेंट्स हुआ करती थी जहाँ पे हम लोग जाते थे। और रेगुलर मील जो हुआ करते थे उसमें था एक उस समय पे गीता भवन हुआ करता था, दिल्ली मिष्ठान हुआ करता था, भगत ताराचंद था। वैसे 3-4 लोकल ब्रांड्स थे, तो जहाँ पे हमको आज घर के जैसा खाना है तो वी यूज्ड टू गो। आप शायद माने या नहीं माने, ऐसा कोई हफ्ता नहीं था जब मैं 15-16 साल का होऊंगा कि मैं एक भी हफ्ता ऐसा मिस नहीं किया होगा कि मैंने भगत ताराचंद का खाना नहीं खाया हो। सो एवरी वीक आई यूज्ड टू गो, एंड मैं भगत ताराचंद जाना ही जाना है। तो ये सब जो कंपनी की शुरुआत हो रही थी, ये सब चल रहा था। तो
मुझे भगत ताराचंद समझ में आ रहा था, मुझे ये सब बड़ी बड़ी ब्रांड्स नहीं समझ में आ रही थी। तो मैंने प्रकाश भाई चावला जो भगत ताराचंद के प्राइमरी ओनर है जलेबी वाले के बाजू में, उनसे बात किया। तो जैसे मेरे ख्याल से मेरे से पहले कम से कम, मैं ज़्यादा नहीं तो 100 तो 100% आके गए होंगे। तो उन्होंने लोग 101 आया है। फिर थोड़ा थोड़ा रेपो चालू किया। बिलीव में मैंने 1 साल सिर्फ ना सुना है, 1 साल, और वो 1 साल में मैंने सूरज की भी गाली खाई है। क्योंकि वो बोलता तू कोई काम धंधा कर नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, कंपनी ते कैसा का वैसा ही पड़ा है। और हम लोग बस, मेरे को वही था वो मीराबाई वाला ये भगत ताराचंद। सो धीरे धीरे हम लोग ने रेपो बनाया और वी फाइनली क्रैक अ 1 डील। हमने गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में आउटलेट साथ में मिलके खोला। नाउ ही इज फ्रॉम अ सिंधी फैमिली, सूरज इज अ मारवाड़ी, आई एम अ गुजराती। So I am blessed that I have 2 mentors who is a Sindhi and Marwadi. So Bhagat Tarachand की हमारे I could say कि we are more of an extended family. We learned a lot from them and एक brand ethics कैसे होने चाहिए वो हमने बहुत सारे वहाँ से सीखे कि right source of material practices कैसे होते हैं, क्या होते हैं, because it's a centurion brand. कोई centurion family brand बनाना या बनना is not a joke. So there is a lot of learning which has come from them also. Today we have associations with them, we are growing. So now what we do is open once a year 1 outlet kind of thing. और जितने भी outlets हैं उनकी मैं Monday या Tuesday, mostly Monday या Tuesday हो ही जाता है हमारे सारों की जितने भी P&Ls हैं, we make sure we see each and every store is profitable. There is nothing which is break even. I don't believe in break even now. पहले बहुत सारे ये सब हमने gray areas देखे and we learned कि there is profit is only works. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने की वो हमारी टीम हमेशा हमारे साथ में रही एंड आई थिंक सो बिजनेस आइडिया सबके पास में है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ने वाली है, सब कुछ होने वाला है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम सब सीख रहे हैं वो और जिसके ऊपर हम सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा एम्फोसिस कर सकते हैं वो है ह्यूमन मैनेजमेंट। सो ह्यूमन मैनेजमेंट अगर आपका राइट है सो एनी टाइम बिजनेस कैन गो वेयर टू वेयर। Anything that you wanted to know and ask? हेमंत जी, जो आपने भगत ताराचंद का कहा, आई एम रियली अ फैन ऑफ भगत ताराचंद। मैं भी वीक में सबसे बढ़िया चीज़ भगत ताराचंद की ये है कि 1 टाइम खाओ तो 3 टाइम खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इतना हेवी खाना मिलता है वहाँ पर, इट्स रियली वेरी टेस्टी। सर पहले मैं आपको थोड़ा स्टोरी बोलता हूँ बिफोर आई से 3 भगत ताराचंद। सो 1947 में ये लोग कराची से आए और कराची में जब पार्टीशन से ये लोग यहाँ पे आए तो दे वर वन ऑफ द फॉर्चुनेट फैमिली के जिनको वहाँ पे ऑलरेडी रेस्टोरेंट चलाते थे पर उनको कुछ पैसे मिले थे। सो दे केम एंड देन दे सेट अप इन वन आउटलेट इन जवेरी बाजार। उस समय पे भगत ताराचंद नाम नहीं था, उस समय पे ब्रांडिंग या दुकान को नाम देने वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं था। सो उन्होंने वापस वो खाना चालू किया और वो टाइम पे एक सब्जी, एक दाल, सादी दाल, ऐसा कोई दाल फ्राई वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी नहीं था, दाल, सादी रोटी, राइस, और आज जो बनाए वो बनाए, ख़त्म हो गया तो डन फॉर द डे। सो रात सो उनका जो एक एटीट्यूड था वो ये था कि कोई भी आवे तो अपने यहाँ से बिना खाए नहीं जाए। और उस समय पे काफ़ी लोग थे कि जिनके पास में बहुत पैसे नहीं हुआ करते थे तो बाद में दे देंगे का कॉन्सेप्ट था उनका। तो वो बोलते थे जो खाना है खाओ, पैसा बाद में दोगे तो भी चलेगा। दैट्स वाई ही इज ओवर द टाइम नोन एज अ भगत। दैट्स वाई द इनिशियल नेम इज भगत एंड ताराचंद वॉज हिज नेम, सो दैट्स वाई द नेम भगत ताराचंद केम। Now this brand is from 1895 और 1947 से यहाँ पे है।
तो आप सोच सकते हो 4 पीढ़ी की एक पहले की है, तो 4 पीढ़ियों के जो भाई हैं सब साथ में ही ऐसे अलग है, बट भाईचारा अभी भी पूरा ही है। आज समझो मैं भी कोई अगर आउटलेट खोलता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरे कजिन्स हैं वो आके हेल्प करके चले भी गए, मालूम भी नहीं पड़ता। सो दैट काइंड ऑफ हार्मनी इज देयर इन द फैमिली। and I go there regularly and I'm missing it for the last 2-3 years. I miss that too also. कब वो खुलेगा? So हमने खोला भी था यही सोच के कि देयर इज, तो एक चीज़ सीखे हम लोग ने कि जब भी कोई रेस्टोरेंट खोलो तो हम लोग को पीछे पर्पस भी चाहिए। तो नरीमन पॉइंट पे बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस था कि वहाँ पे स्टेटस अच्छा ब्रांड है, पर उसके अलावा दूसरा बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। तो वी थॉट ऑफ नरीमन पॉइंट, और सोचा था कि जो वालकेश्वर पेडर रोड के जितने भी फैमिलीज़ हैं तो उनको जवेरी बाजार में गाड़ी का पार्किंग का तकलीफ होएगा, तो नरीमन पॉइंट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। कोविड में वो जो प्रॉपर्टी हमने लिया था वो बैंक करप्ट हो गया, अभी भी मेरा पैसा वहीं पे है, तो कांट हेल्प इट मच, वो प्रॉपर्टी सील हो गई है। और अभी हाल में ऐसा कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे आया नहीं है कि कुछ करे, पर कुछ आएगा तो डेफिनेटली विल सी। एनी मोर क्वेश्चंस? एक मेरा क्वेश्चन है, मैं गिरीश अग्रवाल, आई एम लिटिल बिट ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट दिस बिजनेस मीट। आप जैसा बता रहे हैं, जैसा मेरे समझ में आया कि कोई भी अच्छे बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो हमें पढ़ाया गया था कि मैन, मनी, मटेरियल्स, 3 चीज को मैनेजमेंट की एक बेसिक आइडिया कहा गया है। इन योर लाइफ एक्सपीरियंस, डू यू फील दैट स्टिल दिस 3 आर देयर और एनी मोर यू वांट टू ऐड? So today technology, which is ID. Thank you. And दूसरी है सबसे इम्पोर्टेंट हमारी लाइन में है, वो है स्वच्छता। सो एक प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, शायद कोई रेस्टोरेंट्स करता हो नहीं करता हो मालूम नहीं, बट वी डू दैट, वी डू एवरी मंथ 2 मंथ में मेरी एक टीम है जो मैं उसको आउटसोर्स किया है, जो जाके कोई भी खाना या हाइजीन को ऑडिट करता है, और वो ऑडिट रिपोर्ट मेरे पास में आता ही है। और हम लोग ने प्रैक्टिसेस ऐसे रखे हैं कि जैसे भी अगर वो फूड है तो फूड की लेबोरेटरी चेक होती है, अगर वो हाइजीन है तो उसके फोटोग्राफ लिए जाते हैं। सो वी गिव मोर एम्फेसिस ऑन हाइजीन, बिकॉज मेरे भी बच्चे वहीं पे खाने वाले हैं, सबके बच्चे वहीं पे खाने वाले हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि कितना हाइजीन रख सकें। और दूसरा है जो आपने बोला वो मैन मैनेजमेंट, उसमें हमारी नॉर्मली फूड इंडस्ट्रीज में लोग इसके पहले ऐसा था कि गाली दे के ही बात करते थे, तो we make sure that we talk with the highest respect. If anything goes wrong also, I never like to raise my voice. I can take actions but don't want to raise my voice. So that is what. You want to say that quality is also important. The quality means quality, hygiene, everything that is important. So ये क्लास इंसिडेंट बोलता हूँ, हम लोग हैज जब, बिकॉज हैज इज द मोस्ट चैलेंजिंग बिजनेस, बिकॉज वो एक तो पॉपुलर प्रोडक्ट नहीं है ना, वो बहुत डिमांडिंग एज ए कॉन्सेप्ट था। तो मैं जब हम लोग फ्रूट परचेसिंग के लिए हम लोग ने जैसे एप्पल आते थे तो हर एक एप्पल को हम लोग ने पहले प्लेन जूसिंग किया और देखा कि कौन से वाले एप्पल से हम लोग मिक्सिंग करेंगे। तो वहाँ पे हमने उस समय पे फूजी के 2007 में उस समय पे 300 रुपये किलो के फ्रूट्स आया करते थे। वी प्रिक्योर दोज फ्रूट्स, बिलीव मी, that's how the sales have increased, because once people like you will see there is a good imported fruits are lying on the display, they definitely come and attract. So what we've done is the quality is no compromise. Thank you, Amang ji. Thanks for your time. Thank you so much. ये हमारा जो 6th बिजनेस मीट आप लोगों ने देखा, शुरू से हम 1, 2, 3, 4 करके बढ़ते जा रहे हैं। पहले बिजनेस मीट में वी वर लिटिल नर्वस कि शायद ये आगे बढ़ेगा ना बढ़ेगा, लेकिन अग्रवाल भाइयों ने हमारा साथ दिया। 1 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 50 पे आके रुके।
लेकिन हो सकता है आगे जाके और भी बड़ा ऑडिटोरियम लेना पड़े, करना पड़े। ये जितने भी स्पीकर्स आते हैं, आपको क्या लगता है, आप लोग को क्या गेन मिलता है इससे? मुझे तो इसमें कुछ 4 लाइनें याद आ रही है अभी। पहले भी इतने स्पीकर्स आए हैं, आज भी आए हैं, और सूरज जी के पास तो इसका खजाना है। ये तिजोरी में पता नहीं कहाँ से स्पीकर बंद करके रखते हैं, एक एक को लेके आते हैं, तो एक एक नगीना लेके आते हैं, ऐसे स्पीकर्स हमारे सामने लेके आते हैं। थैंक यू सूरज जी, जो आपकी ये मेहनत, और आप हम सब अग्रवाल भाइयों के लिए आप ये मेहनत कर रहे हैं। ये 4 लाइनें मुझे इस तरह याद आ रही हैं, जिसको मैं समरी करूं कि नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं दोस्तों, मतलब बिजनेस बदलने की जरूरत नहीं। दिशा को बदलो, किनारे, आपका डेस्टिनेशन खुद ब खुद बदल जाएगा। तो ये सब स्पीकर से मुझे ये जो समराइज ये मिल रहा है, मुझे लगता है यहाँ जितने भी हमारे अग्रवाल भाई बैठे हैं उनको भी इस तरह की कुछ ना कुछ, और यहाँ जितने बैठे हैं, अब ये हमने ओपन सेशन रखा है, कोई भी अपना विचार यहाँ कुछ कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है, तो प्लीज़ आप स्टेज पे आ सकते हैं। अपने अगर कोई हमारे सम्मेलन के बारे में कुछ क्रिटिसाइज करना चाहता है, उसको गालियाँ देना चाहता है, तो भी आ सकते हैं। आपने कुछ हमारे बारे में कुछ गलत चीज़ हमने की है, या हमको कुछ सजेशन देना चाहता है, कुछ एडवाइस देना चाहता है, या फ्यूचर के अंदर हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में आप लोग कुछ सुझाव देना चाहते हैं, ऑल आर वेलकम। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई आए, और अच्छा बोले तो बहुत अच्छा है, तो कोई आवे, और कोई है जो बोलना चाहता है। अच्छा और खराब से मतलब नहीं, बोले तो कोई हो तो। प्रकाश सर जी स्टेज पे आके बोलिए ताकि लोग देखें आपको। हम यहाँ से अभी लीडर पैदा, अब यहाँ से हम एक लीडर पैदा करना चाहते हैं, एक लीडर चाहते हैं जो बने। प्लीज आइए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश गुप्ता है, कांदीवली ईस्ट में रहता हूँ। पैकर्स एंड मूवर्स का मेरा कैटेगरी है। आई थिंक नेटवर्क जो ग्रुप है, हम लोग यहाँ बिकॉज ऑफ द बिजनेस, आई थिंक सो बिजनेस नेटवर्क करने आए हैं। तो काफ़ी लोग BNI का नाम सुना होगा, बिजनेस नेटवर्क ऑफ इंडिया। अभी गिरीश जी से बात भी हो रहा था, नीचे खड़े हुए थे, कि हम लोगों को एक राउंड ऐसा चालू करना चाहिए जो हम लोगों को एक दूसरे के बारे में, बिजनेस के बारे में मालूम पड़े। हम लोग आते हैं, नाश्ता करते हैं, स्पीकर से मोटिवेट होते हैं, कुछ हम लोग सीखते हैं, बट आपस में हम लोग दूसरे के बारे में जान नहीं पाते कि इसका क्या बिजनेस है, उसका क्या बिजनेस है। तो आई थिंक हम लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहिए कि क्या क्या यहाँ पे कौन किस बिजनेस में करते हैं। तो एक राउंड वो जरूर चालू करना चाहिए कि सब जो आके एक 30 सेकेंड का या मिनिमम अपना इंट्रोडक्शन दे सके। थैंक यू फॉर दिस गुड प्लेटफॉर्म, वेरी गुड प्लेटफॉर्म। थैंक यू प्रकाश जी। Thank you, Prakash ji. आपका आइडिया नोटेड, we will work on it sincerely. Please come forward, give your feedbacks. Come, आइए, come. आपका फीडबैक ही प्रोग्राम को आगे ले जाएगा, नई दिशा देगा। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 10 मिनट और दीजिए, कोई जावे ना छोड़ के। सब जो अपना अपना विचार रखना चाहते हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि बैठे थोड़ी देर। Good evening दोस्तों, I'm Abhishek Agrawal, Chartered Accountant. I'm based in Thakur Village. So my suggestion to the Manch is कि we can have some dictionary for all the Sammelan members, where we can have a contact detail in handy, where if somebody wants to connect with anybody, just WhatsApp group is, according to me, is not enough to in WhatsApp group the details of the member and the family members details are not mentioned in that, and business details are also not there. So if we have some diary, so where we can reach to each and every member whenever we need that. Thank you. Sanjay is there, is gone. Sanjay, I request like Sanjay Agrawal जो एक टेक्नोलॉजी वाले हैं कि इसको टेक अप करिए and let us make a classification list. We are already more than 150 people on the group, तो 150 का एक बनाइए and Excel sheet बना के सबसे शेयर करिए. Anyone else wants to come up, please? आइए आइए सुनील जी, आइए प्लीज कम। सुनील जी आइए। टर्न करके दो। अपने को मौले में
आवाज की फैक्ट्री खोलनी चाहिए, प्रेसिडेंट को वहां भेज देना चाहिए। क्यों प्रेसिडेंट से इतनी नाराजगी है? दोस्तों, अब ये हमारा आखिरी पड़ाव आ गया। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मुझे कहा गया है। मनमोहन जी दिल्ली से हमारे पास, इनका इतना प्यार है कि जब भी मीटिंग होती है दिल्ली से यहाँ आते हैं। सर प्लीज़ आप आइए, आप अपने विचार रखिए। हुआ कि अपने ग्रुप में जितने मेंबर हैं यहाँ से अटेंड करके जाते हैं, लेकिन उनका कोई फीडबैक नहीं मिलता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना जो भी फीडबैक है, यदि आज यहाँ कोई नहीं भी बोला है तो फीडबैक जरूर उसमें मेंशन करिए, बिजनेस एलएनडी ग्रुप में फीडबैक जरूर दीजिए। इससे क्या होगा, इंप्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा। तो रिक्वेस्ट है कि जरा ध्यान करके फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू। हेलो, अभी दोस्तों आपसे परिचय मेरा हुआ ही था थोड़ी देर पहले। आज जो 3 स्पीकर यहाँ पर आए, बहुत अच्छी उन्होंने अपना बात बताई, शेयर किया। मेरा कुछ पर्सनल फीलिंग मुझे हुआ कि उन्होंने क्या बात यहाँ सिखाई, क्या बात समझाई, क्या बात हम शाम को अपने साथ घर लेके जाएंगे। सबसे पहले विकास जी ने कहा कि मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ और 6 बजे तक जो अपना बुक राइटिंग का काम है, इम्पोर्टेंट काम है, वो मैं कर लेता हूँ। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि दुनिया में जितने भी बिलियनर्स हैं वो सुबह 4:30 बजे ही उठते हैं। सही है। और आकाश जी ने फिर एक बात कही कि वो जो बुक लिखते हैं वो इंस्पिरेशन कहाँ से आती है, कैसे हम लोग अपने को, मन को हम अपना कंसंट्रेट करें कि हम लोग वो काम को कर सकें। क्या हम फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं वो कैसे हम याद रख सकें। उसके लिए बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल होते हैं सब लोग। मेरे ख्याल से जितने भी लोग बिजनेस शुरू करते हैं वो सब सक्सेस के लिए ही शुरू करते हैं। कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो सोचता हो कि भाई मैं बिजनेस अनसक्सेसफुल होने के लिए शुरू करूं। लेकिन आज मैं सोचता हूं कि अगर लोग अनसक्सेसफुल होने के लिए बिजनेस शुरू करें तो वो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते। हमारा सबसे बड़ा जो बिजनेस में सक्सेस होने का जो मूल सिद्धांत होता है, जिन लोगों का मैंने स्टडी किया, उन सबका यही है कि वो अपना जो मन है उसको एकाग्र रखते हैं, उसको कंसंट्रेट करके रखते हैं, फोकस करके रखते हैं। इस बारे में मुझे एक गुरुजी की एक बहुत पुरानी बात याद आई कि हम लोग पूजा करने बैठते हैं, अपना कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठते हैं तो हमारा मन इधर उधर भाग जाता है, उस जगह रुकता ही नहीं है जिस काम के लिए हम बैठे हैं। पूजा में बैठे हैं तो पूजा में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम के लिए पढ़ने बैठे हैं तो एग्जाम में मन नहीं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो मैंने एक बार पूछा गुरुजी से, गुरुजी ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ क्यों ऐसा है? तो गुरुजी ने कहा हमारा जो मन है वो हमेशा गंदी चीजों की तरफ जाता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि एक स्वीट शॉप है, उस स्वीट शॉप में एक मक्खी वहाँ पे स्वीट्स पे घूम रही है, एंजॉय कर रही है स्वीट्स को। सडनली उसके सामने से, दुकान के सामने से कचरे की ये गाड़ी निकलती है, तो मक्खी वहां से स्वीट से उठ के एकदम कचरे पे पहुंच जाती है और फिर कचरे से वापस स्वीट शॉप पे आ जाती है। ऐसे हमारा मन है, जब हम काम करने बैठते हैं, अपने अकाउंट्स लिखने बैठते हैं, अपने कुछ भी काम में इंपॉर्टेंट सोचते हैं तो हमारा मन इधर उधर भाग जाता है। अगर वो हम मन अपना उस जगह पर रख लें तो हमारे सक्सेस होने के चांस आई बिलीव 20 या 25% तो बढ़ जाने वाली है। सेकेंडली, जो भी हम काम करें 99% से ज़्यादा अनसक्सेसफुल हैं लोग बाग बिजनेस में, तो हमें वो अनसक्सेस जो है वो हमेशा एंजॉय करनी चाहिए। हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि भाई हम अनसक्सेस हो गए हैं, हमारा मन क्यों ऐसा उदास हो गया है, क्यों है, क्योंकि वो जो अनसक्सेस है वो ही हमें कल सक्सेस दिलाने वाली है। जैसा भी मेरे दोस्त ने कहा कि वो हैज में कई बार सेल नहीं ले पा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने सेल लेके आए। क्यों? क्योंकि उनको जो अनसक्सेस से जो मार्गदर्शन मिल रहा था वही उनको सक्सेस में लेके गया। तीसरा, एक जो हमारे प्रेस्टो वाले आए थे सर,
उन्होंने 40 स्टोर खोले, शायद आप लोगों को मालूम हो या नहीं हो, मुझे मालूम नहीं है। एक ब्रिटिश ब्रांड था बैंड बॉक्स, ठीक, गारमेंट लॉन्ड्री का बिजनेस, ठीक। दे वर हैविंग मोर देन 1500 स्टोर्स इन इंडिया, मोर देन 1500 स्टोर्स। वो क्यों? क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, वो उनका फ्रेंचाइजी था, वो बैंड बॉक्स का वो चलाता था। दैट वाज अ सक्सेसफुल बिजनेस, ऑलवेज अ सक्सेसफुल बिजनेस। और बिल्कुल सही कहा कि बिजनेस इज नेवर ओवर। बिजनेस तो हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी देता ही है लाइफ के अंदर। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू जी कि आपने मेरी बात को ऑथेंटिकेट किया। सो मेरा सभी जितने अग्रवाल भाई हैं उन सबसे एक ही अनुरोध है कि व्यापार हो, लाइफ में कुछ भी अनसक्सेस सक्सेस जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। हमारी जब जेब भरी होती है तो हम सक्सेस समझते हैं, लेकिन अगर हमारा दिल खुशी से भरा है तो हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। और मैं इसी के साथ आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और नेक्स्ट टाइम होगा तो शायद अग्रवाल जी मुझे मौका देंगे तो मैं जरूर अपने मन की बात करूँ। थैंक यू। मैं 2 मिनट शेयर करना चाहूँगा। अपना ये प्रोग्राम आजकल वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। मुकेश मेहरा जी हमारे सामने, मुकेश जी हाथ ऊपर करोगे? तो ये सब YouTube में रिकॉर्डिंग करके अपना जो चैनल बन गया है उसमें लोड हो रहा है। तो ग्रुप के अंदर वील कीप शेयरिंग, अब आगे फॉरवर्ड करते जाइए, लोग देखें, जो यहाँ नहीं आते कम से कम इस सबको देखें और उससे प्रभावित होकर अपना बेनिफिट करें। लेट मी शेयर विथ यू फ्यू थिंग्स जो लास्ट 5-6 सेशन में आई हैव लर्न फ्यू थिंग्स माई सेल्फ ऑल्सो। सो व्हाट आर लाइफ के अंदर व्हाट गिव्स यू सक्सेस, व्हाट डज नॉट गिव यू सक्सेस, ऑल दिस फेलियर स्टोरीज आर मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप सक्सेस क्यों नहीं हुए। So everyone should improve their life and remove that particular points in their life and maybe they'll get better success. जो हमारे जम्बो किंग वड़ा पाव ने कहा था, that was a real life example. Many of you all were there. How many were present in the Jumbo King Vada Pav lecture from here? Hardly 10-15 of us. His story was exceptional. He talked about his story from 1 crore to 10 crores to 100 crores to 1000 and plus 1000. तो उन्होंने जो क्वालिटी शेयर करी थी, आज सब स्पीकर के अंदर वी कैन सी दैट थिंग, ऑल थिंग अराउंड. His one most important point was relationship, human relationships. With the people working around you, good relationships will take you to success. His one very important point was transparency, integrity. वो भी अपने देख रहे हैं स्पीकर्स के अंदर यही आता है कि बिजनेस में इंटीग्रिटी नहीं होगी. आज हमारे विकास जी ने शेयर किया अबाउट जीरो डेप्ट. I'll share one example. Once one bank manager shared with me how there was 100 failures of business. How there was 100 failures in a business. One bank manager went to one particular town. He offered loans. He offered loans to people 3-4 times of the capacity, and he took a kickback from them. So that taking excess loan, giving a kickback, and wasting that money, all those businesses were closed in the next 5 years because their interest was more than the income they were doing. So कभी भी जो आज विकास जी ने कहा zero debt या low debt या utilizing your money properly, very properly, otherwise you will never get success in life. Second point जो again from Jumbo King I'm sharing is patience and humility. Business में commitment, patience, being humble with your people, with your clients, with your suppliers, otherwise you will never get success. तो ऐसी कई पॉइंट्स हैं, अपने सीखते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, and please use it for yourself, your friend families, your children, and let us all have some more better success in life, and please keep sharing if you are benefited by coming here. That's all from me. Anyone else wants to share something? Any more example? We have to appreciate the effort of Suraj Saraogi in all these programs, effort of Sunil Sirasnewala ji जो अपने को ये प्रोग्राम में ऑडिटोरियम में हेल्प करते हैं बुकिंग कराने में, and his
His passion for this program is such great कि even I was motivated कि ये प्रोग्राम तो होते रहना चाहिए. गिरीश जी कहाँ हैं? Yes, गिरीश अग्रवाल जो इस ये पूरे प्रोग्राम के बैकबोन है. On everything you can see. Finally, सुमन अग्रवाल जो हमारी डायरेक्टर है बिजनेस मीट की, who was our MOC and she also behind this program. Not to forget शिवकांत खेतान, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, जो ये एक प्रोग्राम नहीं कई प्रोग्राम अग्रवाल सम्मेलन के आगे करते रहते हैं, which all aware. So before I close, I'll give it to शिवकांत जी for his last words. थैंक यू राजेंद्र जी. दोस्तों 15 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती है हमारी. इस पे हमने एक स्वतंत्र वीर सावरकर ऑडिटोरियम बुक कर रखा है. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम में आइए. और हमारे अग्रवालों का ये धर्म है और हमारा ये कर्म है कि हमारे भगवान अग्रसेन जी को हम सब मानते हैं और उनकी जयंती पे हमें सबको आना चाहिए. तो मैं सबसे ये आज ओथ लेवाना चाहता हूँ कि आप सब लोग आएंगे वहाँ पे और आप अपनी फैमिली के साथ आएंगे. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है 15 अक्टूबर शिवाजी पार्क पे स्वतंत्र वीर सावरकर ऑडिटोरियम 326 हमने बुक कर रखा है. वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फैमिलीज के बच्चे, उनकी महिलाएं और पूरी फैमिली उसके साथ जुड़े ताकि एक फैमिली प्रोग्राम हो जाए. साथ में हमने एक म्यूजिकल ट्रुप को इन्वॉल्व कर रखा है ताकि लोगों को हम जोड़े रखें. लेकिन जब तक आप लोग नहीं जुड़ेंगे तो प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं है. हमने देखा कि अग्रवालों के प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पर फ्री प्रोग्राम होता है, फ्री लंच डिनर होता है, एवरीथिंग इज फ्री, बट स्टिल क्राउड इज मिसिंग. तो ये क्यों है, ये आज तक मेरे तो समझ में नहीं आया कि जब सब कुछ फ्री है, सब कुछ ऑन द हाउस है, फिर भी हम लोग वहाँ नहीं पहुँचते. तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी एक टीम वर्क का जो एक टीम होनी चाहिए वो की कमी है कहीं ना कहीं हम लोगों में. सो वेरी सॉरी टू से कि हम लोगों को इससे ऊपर उठ के अग्रवालों के फंक्शनों में जाना चाहिए. मैं ये नहीं कहता हूँ कि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के फंक्शन में कोई भी अग्रवालों का फंक्शन हो तो कम से कम हमें यूनिटी तो लगे, कम से कम लोगों को पता तो चले आज यहाँ पर 1000 लोग खड़े हैं, यहाँ पे 5000 खड़े हैं. मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब हम इंटरटेनमेंट प्रोग्राम नेहरू सेंटर में करते हैं, मैं मेरे खुद लड़के का एग्जांपल देता हूँ. वो जब आके उसको मैंने ज़बरदस्ती बुलाया, वहाँ पर जब 1100 अग्रवाल देखे तो उससे बोला पापा इतने अग्रवाल हैं क्या बॉम्बे में. मतलब आप देखिए कि इतने लोगों को देख के लोगों को आश्चर्य होता है. उनके फ्रेंड्स कौन है, आज अदर कास्ट है, उनको अग्रवालों से कोई लेना देना नहीं है. जब तक हम अपने बच्चों को जोड़ेंगे नहीं, हमारी फैमिली को जोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे में यूनिटी कैसे आएगी और ये हमारी संस्कृति बढ़ेगी कैसे. अगर हम यही रुक जाएंगे तो हमारी एज क्या है, एक सर्टेन एज पे जाएंगे तो वी विल बी ओवर. तो ये हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएगा कौन. तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पूरी फैमिली को उस फंक्शन में लाइए या और किसी भी फंक्शन में जाइए, लेकिन अग्रवालों के फंक्शन और किसी फंक्शन में भी जाइए, लेकिन अग्रवालों के फंक्शन को मिस मत करवाइए, फैमिली के साथ आइए. आज मुझे भी ये बोलते हुए मैं बोलूँगा, जब मैं भी यंग एज में था या बचपन में था, मेरे पेरेंट्स या मेरे फादर बोलते थे कि अग्रवालों का फंक्शन है चलो, मैं कहता था पापा आप जा रहे हैं ना, मेरा क्या काम है. यही सेम आंसर हमको अपने बच्चों से भी मिलता है. सो वी हैव टू चेंज. और हम वो सब कुछ करने को तैयार है जो हमारे यंगस्टर चाहते हैं, जो हमारे बच्चे चाहते हैं, जो हमारी महिलाएं चाहती हैं. हम वो सब कुछ जैसा वो चाहते हैं वैसा करने को तैयार है. हम लोग आपके सजेशंस के लिए अवेट करेंगे कि क्या सजेशन आप देना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं, जिससे हम अपना मोटो बदली करें, हम अपना सोचने का तरीका बदली करें, हम अपने फंक्शंस बदली करें. जैसे फंक्शन चाहिए, आपको डिस्को थिक चाहिए, हम डिस्को थिक बुक कर देंगे. आपको क्या चाहिए वो बुक कर देंगे. बट वी वांट यंगस्टर्स टू कम. आज यंगस्टर्स ही तो आगे जाके ये संस्कृतियों को बढ़ाएगा. तो आप अपने बच्चों से बात करिए, उनसे इंटरेक्ट करिए. मैं बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं कि सबसे पहले डोनेशन या दान अपने को देना चाहिए, ये तो सब सेकेंडरी है. पहले अपने घर को तो सुधारो, अपनी वाइफ से तो बात करो. अपने वाइफ से ही हम बात नहीं करते. हम बिजनेस में इतना लगे रहते हैं, 5 मिनट वाइफ को नहीं देते, 5 मिनट बच्चों को नहीं देते. उनसे तो इंटरेक्शन करिए, उनको तो अपने साथ जोड़िए. पहले आप तो जुड़िए उनके साथ में. आप उनके साथ जुड़ेंगे, 10 मिनट उनसे बात करेंगे तो वो आपके साथ में थोड़े फ्रेंडली होंगे. फ्रेंडली होने के बाद में जब आप उनको कुछ कहोगे तो डेफिनेटली दे विल कम विथ यू. तो मैं आप सबसे जितने भी यहाँ मेरे भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं,
मैं उनसे रिक्वेस्ट, और बहनों से तो स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप अपने हस्बैंड को समझिए, वो क्या चाहता है, वो जैसा बोलता है वैसा करिए, थोड़ा सा उनका साथ दीजिए, तो ताकि उनको भी एक सपोर्ट सिस्टम मिले। और ये जो बिजनेस मीट ये खाली हमारे पुरुषों के लिए नहीं है, आगे से स्पाउस के साथ आइए, आज जोड़े से आइए, ताकि ये बातें कह के हम बहनों को कुछ तो बतावें कि आप अपने पतियों को जोड़े। अच्छा, अब मैं हमारे बीच में हमारे कमेटी मेंबर्स हैं, मैं उनको थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो भी बिजनेस मीट में आते हैं, आई वुड जस्ट से अगर इसे जयंती के प्रोग्राम आना, इट शुड बी अ कमिटमेंट ऑफ एवरीबॉडी। वो प्रोग्राम में क्या होने वाला है, वी आर गोइंग टू हैव अ 15 मिनट्स प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज AgrasenMaharaj, his story. So we are on that program we are having a person called Sunny Agrawal. He is a film star of Rajasthani movies. He is going to come and talk about story of AgrasenMaharaj for 15 minutes. We are giving opportunity to Agrawals, their children, wives, who wants to perform. So there will be a slot of performance by our members, friends and relatives. So anyone wants to come forward, please give your nominations. And we are going to also have a musical program. So I would request each and everyone to be present over there with your friend, family, spouses and children. Sunil ji, are you? थैंक यू एवरीबॉडी, सब लोग यहाँ पर आए, अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इसी तरह आप सब जुड़े रहेंगे और अग्रवाल भाइयों बहनों को इस बिजनेस मीट से जोड़ेंगे, यही हम चाहते हैं। और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ग्रुप पर और यूट्यूब चैनल को फॉरवर्ड कीजिएगा सभी अग्रवालों को, ताकि अगली बार वो सब भी इस कार्यक्रम से जुड़े और आगे बढ़े।